तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि एग्जामिन द इंटेलेक्चुअल ड्राइवर्स बिहाइंड द बर्थ ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट थ्रू स्कॉलरली प्रिज्म। तो देखो सर, स्कॉलर का नाम है बेटा आइवो गोल्डस्टीन। आइवो गोल्डस्टीन, GOLDSTEIN। आइवो गोल्डस्टीन स्कॉलर का नाम है। स्कॉलर जो है इसने बेसिकली इंटेलेक्चुअल ड्राइवर्स जो थे बिहाइंड द नॉन अलाइनमेंट उसके बारे में चर्चा की है। He has basically said two important things. He says कि intellectually there are two drivers of non-alignment. The first driver has been the idea of a right to self-determination. So he said कि what happened after the World War One in the world is that the spark of RTSD, in short, which means right to self-determination, it began to pick up very aggressively. So he went on to say कि भाई right to self-determination is a very important point because it basically inspired many colonial countries at that time to seek a space for themselves. And non-alignment, which eventually manifested in the world at one point of time after the World War II came to an end, was largely inspired, as per him, by right to self-determination, number one. Number two, he says that the second intellectual driver behind the birth of non-aligned movement has been basically the world and its division into a bipolar world. So he says that polarity thesis is responsible for the birth of non-alignment. And in the polarity thesis, it is basically the bipolar world which created the birth of non-alignment at that time. Because bipolar world created a scenario where certain countries who wanted to seek a manifestation of their own destiny their way found a right to self-determination very connected there. आप समझ रहे हो इस पॉइंट को बेटा? क्योंकि देखो, अभी हमने जब बात करी बाइपोलैरिटी की, हमने क्या बोला कि भाई एक बाइपोलर वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्या आएगी? बाइपोलर वर्ल्ड में प्रॉब्लम ये आएगी कि भाई कंट्रीज विल हैव टू रिस्ट्रिक्ट देयर ओवरऑल इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज टू दोज टू बाइपोलर ब्लॉक्स which are there. So certain countries which wanted to seek RTSD, right to self-determination, found that their liberty and freedom will be constrained in the bipolar world. So they basically thought that bipolar world is not going to be a liberation for us. So from that perspective, intellectually speaking, non-alignment inspired by bipolarity was seen as an attempt to have independent liberated foreign policy. तो ये इंडिपेंडेंट लिबरेटेड थॉट प्रोसेस क्लियर हो गया जी आपको? ठीक। अब आते हैं कि भाई इज इट स्टेटेड दैट द इम्पिटस फॉर नॉन अलाइनमेंट स्टेम्ड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। अभी तक तो देखो दो सोर्सेज की बात तो कर ही ली आई वो गोल्डस्टीन ने, कि एक तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ड्राइवर था, एक बाइपोलैरिटी ड्राइवर था। इज इट दैट देर आर मल्टीपल अदर सोर्सेज ऑल्सो? तो देर आर मल्टीपल अदर सोर्सेज। फर्स्ट सोर्स हैज बीन ऑल्सो नाउ, और क्रोनोलॉजिकली थर्ड सोर्स या अदरवाइज इस क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से फर्स्ट सोर्स, it is basically independent economic path. Independent economic path means here that those countries which were non-aligned wanted to seek an independent economic path. And in this perspective, what finally happened is that these countries found an alternative, that we don't want to have a communist or capitalist way of developing ourselves. Our way of developing our economy must be suited as per our own strategy. अच्छा, अब ये पॉइंट पे ना काफी डिबेट करेंगे अपन परसों व्हेन वी मीट फॉर द फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स आल्सो, बिकॉज उसमें मैं आपको ये पॉइंट दोबारा बताऊंगा कि नेहरूवियन इकोनॉमिक्स के टाइम पे ये जो एक मिथ क्रिएट किया गया, और स्कॉलर्स के थ्रू हम देखेंगे उसको कि व्हाई दिस इज इकोनॉमिकली आल्सो स्पीकिंग अ मिथ, कि इंडियाज इकोनॉमी वाज मॉडल्ड ऑन द सोवियत लाइंस, बिकॉज देयर इज नो एविडेंटरी प्रूफ अवेलेबल. See, having inspiration from the Soviet model is one thing, sir, but having an economy which is an extension of the Soviet model is another thing. अब फर्क समझ रहे हो बेटा? तो यहाँ पर इंडिया फिट्स इनटू दैट कैटेगरी वेयर वी सेड कि वी डोंट वांट टू हैव अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हिच इज लेड बाय कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म. We want our independent economic development. We want to develop ourselves economically in an independent manner. So in this sense, economic growth has been one of the sources. Second, very importantly, countries believed that any diversion to military development is a diversion from development. So second important source here is the perception of countries. The perception of countries that any kind of basically
development of military at a time when the world is bipolar. Such a diversion of resources to development of military is basically undercutting development. It is an attempt to basically not focus on development. So with the primacy of development, they countered the military expenditure. अच्छा, जब हम अभी नॉन अलाइनमेंट पढ़ेंगे भी ना, आप देखोगे कि दिस रिमेन्ड वन ऑफ द वीकेस्ट पॉइंट्स इन नॉन अलाइनमेंट. व्हाई? बिकॉज देयर वाज नो कोहेरेंस. When we say there is no coherence means कि भाई when India was confronted with the threats related to sovereignty by Pakistan and China, India instantly decided to resort for military expenditure. And then it justified the military expenditure by saying at that time after 1962 and 65 कि भाई this is done in the national interest of safeguarding our sovereignty and security. So you have to have a very coherent point. और ये ना मैं आपको point इसलिए भी बता रहा हूँ बेटा, because questions might come on this point as well कि why NAM or non-alignment could not succeed effectively. And one of the very important reasons why it could not succeed effectively is because of lack of coherence in its own idea. Because if you are announcing a principle, you need to stick to it, sir. Come what may. भाई नॉन अलाइनमेंट में अब आप देखो थर्ड थर्ड सोर्स जो नेक्स्ट सोर्स है, दैट थर्ड सोर्स वाज प्राइमेसी टू डायलॉग. Non-aligned countries always believed that any global conflict, howsoever hard it may be, can be resolved through dialogue. तो अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखो तो द थ्री पॉइंट्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन दिस क्वेश्चन आर ऑल इंटरलिंक्ड टू ईच अदर. कि भाई यू वांट टू हैव एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट आइडिया. यू वांट टू आल्सो मेक श्योर कि योर मिलिट्री रिसोर्सेज आर नॉट डाइवर्टेड, rather they are used for development, and therefore you can ensure that every problem in the world can be resorted to resolution through dialogue. बट सर क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि भाई when India confronted a problem with Pakistan in 1947-48, then followed by that in 1965, it had a problem with China in 62. Then the question is, why did India not take the recourse of dialogue after these issues? India cannot today claim to say कि भाई we tried dialogue with China, but dialogue failed, so 1962 happened. But when you have outrightly stated that every global problem can be resolved through dialogue, then it also means that your dialogue strategy was not effective somewhere or the other. और डायलॉग स्ट्रेटेजी इंडिया चाइना के बीच में तो इफेक्टिव इसलिए भी नहीं थी कि सर देयर वाज अ लॉट ऑफ यूनिलैटरलिज्म इन इंडिया एट दैट टाइम. यूनिलैटरलिज्म मींस कि नेहरूवियन परसेप्शन दैट ओनली माय वे ऑफ लुकिंग एट द बॉर्डर इज राइट. भाई you have to understand, sir. Let's also remember one thing कि Nehru, for that matter, was not a good negotiator. When we say negotiator, we mean कि भाई as a prime minister, you have to negotiate very effectively to also accept the fact that other party may have certain concerns which you need to be sensitive to. अब merely saying कि भाई I am a global figure, so therefore my point of view is the only point of view, and therefore there is no alternative space I will give to China to express their opinion, eventually led to 62 clash. And see the beauty, sir. After 62 clash, you started modernizing the military and then started saying कि नहीं नहीं, this is required for our security. So does that not tantamount to diversion of resource from development then? इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो सर स्टडीज तो यही प्रूव करती है ना कि 62 के बाद जो मॉडर्नाइजेशन मिलिट्री का अपन ने किया, उसकी वजह से तो जो रिसोर्सेज का डाइवर्जन हुआ उसमें हमें 1964-65 में हमने कंट्री में ऑलमोस्ट फैमिन जैसे सिचुएशन भी देखे. फूड शॉर्टेजेस जिसको हमने एक नया वर्ड दे दिया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि फैमिन तो अब वो कॉलोनियल टाइम पे यूज करते थे. वही शब्द अगर पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में भी यूज करेंगे तो लोग कहेंगे कि फिर आजादी किस बात. तो हमने उसके लिए एक नया शब्द इन्वेंट कर दिया, फूड शॉर्टेज. थी क्या वो सर? वो फूड शॉर्टेज वाज नथिंग बट फैमिन ओनली. नहीं, भुखमरी एक प्रकार का फेमिन ही है ना सर. वो तो आप शब्द कोई भी दे दो. तो सर दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, इनको दिमाग में रखना, बिकॉज दीज विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई नॉन अलाइनमेंट एज एन आइडिया कुड नॉट कोहेरेंटली और इफेक्टिवली इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग काउंटर टू द एग्जिस्टिंग करंट्स एट दैट टाइम विच वर द बाइपोलर करंट्स. अच्छा, अब आते हैं कि भाई नॉन अलाइनमेंट वाज डब्ड एज न्यूट्रलिटी बाय द वेस्टर्न थिंकर्स, आइडेंटिफाई द थिंकर्स एंड प्रेजेंट द केस थ्रू स्कॉलरली प्रिज्म. Sir, one important thinker at this level who has basically perceived non-alignment as neutrality has been Alan Foster Dulles.
इसका नाम हम पहले भी यूज कर चुके हैं, एलन फॉस्टर ड्यूल्स, DULLES। सर एलन फॉस्टर ड्यूल्स जो है, ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि भाई नॉन अलाइनमेंट बेसिकली मींस दैट अ कंट्री इज न्यूट्रल। बट सर लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग बच्चे, कि नॉन अलाइनमेंट इज नॉट न्यूट्रलिटी। And why non-alignment is not neutrality is because of a very simple reason, because neutrality is a legal concept. And in a neutrality type legal concept, which is a state policy which says that, we will remain neutral on certain issues. Non-alignment never advocated for this. Non-alignment, in fact, very categorically advocated that we will take an active approach on every global issue, but we will consider each issue on the merit of it. So merely saying कि sir non-alignment is neutrality is wrong, because when you say non-alignment is neutrality, you are trying to say an important thing कि non-aligned countries are going to be mute spectators in the world. They will not react to any event. But did we do that, sir? No. इनफैक्ट अब आपको एक पॉइंट और बता रहा हूँ, ये आगे काम आएगा आपको अगले यूनिट में, जब हम बात करेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी कंटिन्यूटी एंड चेंज, जो एक टॉपिक है हमारा। उसमें हम ये कहते हैं कंटिन्यूटी एंड चेंज में कि वन एलिमेंट ऑफ चेंज इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज दैट टुडे वी हैव स्टार्टेड बिकमिंग मोर रिएक्टिव। सर द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज दैट नो, इट इज नॉट द ट्रूथ। वी हैव ऑलवेज बीन रिएक्टिव। In fact, non-alignment also gave us the space to react to events, but on the merit of them. Today, it is the same strategic autonomy जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे जाके, कि it is the same strategic autonomy which is a realigned version of non-alignment that again gives us the same space to react to events. And both the points very clearly negate the idea that non-alignment is neutrality, because neutrality means that you are legally taking a position that I am not going to offer any kind of opinion on the issue. आप समझ रहे हो इस पॉइंट को सर? एज अ न्यूट्रल कंट्री इंडिया नेवर सेड है कि भाई वी विल नॉट सपोर्ट और अपोज। वी सेड वेरी क्लियरली इट इज नॉट अबाउट सपोर्टिंग और अपोजिंग सर, इट इज अबाउट रिएक्टिंग। व्हाट इज आवर व्यू? प्लीज अंडरस्टैंड दिस, reacting. When we say that India reacts means कि sir India offers an opinion. When we say India reacts, it does not mean that India has to support an issue or negate an issue. और ये चीज ना प्रॉब्लमेटिक इसलिए है, और आप इस चीज को समझो, ये आगे जाके आपको जब हम इंडिया एंड ग्लोबल पावर्स पढ़ेंगे तब भी काम आएगा, जब हम यूएस की बात करेंगे। बिकॉज यूएस डज नॉट happen to understand this basic point that when India reacts, it is merely offering an opinion, sir. If India is today reacting to, let's say, the Ukrainian issue and saying that for Russia and Ukraine, this is not the time for war, the Americans are unfortunately perceiving it as a point that India is supporting Russia. By when did we say that? See, please understand, ये problem इसीलिए है एलन फॉस्टर ड्यूल्स की वजह से, because these Americans have always believed that Indian policy stature is always neutral, जबकि ऐसा नहीं है। Because please understand, I repeat again, sir, neutrality is a state policy. It is a legal idea that I will just remain neutral to an issue. And neutrality has no relationship with what we call as reaction. These are two different concepts. India has never ever used non-alignment for neutrality. India has used non-alignment for reaction. And I repeat, India has used today's strategic autonomy for reaction. For us, reaction does not mean supporting or opposing. I repeat, for us, reaction means providing an opinion about an issue based on the merit of how we feel about it. It's not necessary that our opinion is always going to, benefit somebody or create some goodness for somebody. It's our way of looking the world. हमें टिप्पणी नहीं है, हम ओपिनियन दे, इस चीज को समझो आप। So your thinking has to be very clear, beta, because even when you write answers, ये गलती नहीं करना वहां पे। और देखो आज की डेट में आप ये बार बार सुनोगे इवन न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में कि इंडिया इज अ कंट्री दैट ऑफन रिएक्ट्स।
So please remember, I repeat lastly that again, reaction means that we intend to offer our opinion. Our opinion does not mean our support. Our opinion means based on the values that we possess, this is how we process the info and this is how we look at the world. समझे जी? अब आते हैं जी, was there a domestic socio-political basis for India to pursue non-alignment? देखो सर, जब आप ये बात करते हो डोमेस्टिक सोशियो पॉलिटिकल बेसिस, तो इसका क्या मतलब होता है? पहले तो इसका मतलब समझो सर। डोमेस्टिक सोशियो पॉलिटिकल बेसिस मींस कि सर, डज योर डोमेस्टिक society and does your domestic political thinking have a value where non-alignment basically became natural as a feature to the society and the people and your polity? Sir, let's understand it one by one. There are two words here: political and social. Politically speaking, sir, India throughout the period of Indian national movement nurtured in the people a very crucial value of developing their own opinion on what may be the right path. देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Throughout the national movement, we encouraged our population at the political level through our political leaders that let people have the liberty to decide upon a political path they would like to use for the purpose of liberation of the country from colonial rule. But there was a path taken by Bhagat Singh also. There was a path which was taken by revolutionaries also. There was a path which was taken by moderates also. There was a path taken by Gandhi also. There was a path taken by Subhash Chandra Bose also. Then there was a path taken by Swarajists also, who wanted to enter the councils and make them ineffective from within, even when the remaining Congress said, no, we don't want to enter. Idea is what, sir? We never said throughout our national movement at the political level that this is the only way which is the right way. See, this is an important point. Because when you train the psyche of your population to accept that there are different shades of gray, and the world is not to be seen as a black and white world, and when your political class nurtures this value at the social level, then sir, one thing is very clear, that in this scenario, it becomes apparent that even at the foreign policy level, you will have a similar way of life. इसी रीजन से देखो बेटा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला कि नॉन अलाइनमेंट वाज दैट वी विल लुक एट द इवेंट, वी विल रिएक्ट टू इट द वे वी फील लाइक, वी विल ऑफर आवर ओपिनियन. Gandhi had his own opinion to offer during national movement. Bose had his own opinion. Sardar Patel had his own opinion. Jinnah had his own opinion. Let's understand, sir, this value percolated into the society because of the domestic socio-political engagement at the national movement level. Because our nationalist leaders had inculcated this value. That is why our foreign policy and non-alignment was a reflection of diversity. अब देखो ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं कि because of this diverse socio-political base that was nurtured during the national movement, the non-alignment also came out as a policy architecture reflecting international diversity. Because at one place we were having a relationship with a country like Japan in the 1950s, even though Japan was at that time an ally of US. We had that the same time we had a relationship with the Soviet Union, even though they were outright communists. We had a relationship with the Americans during the Cold War. We asked them for weaponry support after 1962, also because we had a relationship based on the merit of the situation. Because we had taught our people very clearly कि sir, there are different ways of looking at the world. और यही चीज फर्क है बेटा आज की डेट में जो बीजेपी की फॉरेन पॉलिसी है और बीजेपी का जो आउटलुक है सोसाइटी में, कि देयर इज ओनली वन वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड, वन नेशन, वन लीडर, वन ट्रेन, वन एवरीथिंग, वन वंदे भारत, बाकी सब बंद कर दो ट्रेनें.
वन मालगाड़ी, वन नेशन, वन बिजनेसमैन, वन अडानी, वन अंबानी. Sir, you cannot do that or enforce that in a country which is diverse like India, sir. You cannot do that. So your way of looking at the world is not necessarily going to be accepted by a population, and specifically that population which has been born and brought up in a different culture. आप समझ रहे हो इस चीज को? So sir, domestic socio-political base was created during national movement. Domestic socio-political base changed the psyche of the population, encouraging diversity. And this domestic population eventually consented to our leaders during the post-colonial period to go for non-alignment, which also was a reflection of this diversity. सर, हमारे लीडर्स ने उस समय कभी भी अस वर्सेस देम नहीं किया, 80 वर्सेस 20 नहीं किया, हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं किया, ब्राह्मण वर्सेस रेस्ट नहीं किया. सर, ये बटेंगे तो कटेंगे की बात नहीं है सर. बात ये है कि बटेंगे तो हटेंगे. एक्चुअल नारा ये है इनका. और ये बोल नहीं सकते ना कि बटेंगे तो हटेंगे, बिकॉज राहुल गांधी क्या कह रहा है, कास्ट सेंसस बांटो. और उसको पता है, मैंने आपको बताया, बटेंगे तो हटेंगे. क्योंकि अभी तो सिर्फ जो है 4%, 6% वर्ग जो है ब्राह्मणिकल वर्ग के पास सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड है. तो ये चीज को समझो सर, इट्स नॉट बटेंगे तो कटेंगे, इट्स बटेंगे तो हटेंगे. तो ये जो मायोपिक थिंकिंग है ना सर, ये इम्पोज की जा रही है सोसाइटी में. नॉन अलाइनमेंट वाज नॉट दैट सर. नॉन अलाइनमेंट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर डाइवर्सिटी. और आज भी देखो, आपको अगर ये डोमेस्टिक सोशियो पॉलिटिकल बेस देखना है तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में भी वही है कि भाई, मेरिट ऑफ द सिचुएशन इज, इफ रशिया इज गिविंग अस चीपर ऑयल वी विल बाय इट फ्रॉम रशिया, एंड इफ अमेरिकans आर गिविंग अस ड्रोन टेक्नोलॉजी विल बाय इट फ्रॉम यू. इसी रीजन से ना, हेनरी किसिंजर ने एक बड़ा गंदा कमेंट भी मारा था इंडिया को लेके. उसने कहा था कि इंडिया बेसिकली इज अ काफ that just attaches its mouth to a mother nipple and starts sucking out the milk from everywhere wherever they get the milk. खैर, उसका थोड़ा बोलने का तरीका थोड़ा रूड सा था. मतलब इस तरीके से कोई बोलता नहीं डिप्लोमेसी में, एटलीस्ट. मतलब ये चीज अगर हमारे आज के प्रधानमंत्री बोले तो मतलब शायद हो सकता है उनको नोबेल पुरस्कार मिल जाए इस स्पीच पे. पर डिप्लोमेसी में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता. पर किसिंजर जो है वो सस्ता नरेंद्र मोदी था उस समय का, तो वो ऐसी बातें कर लेता था, उसको लिबर्टी थी. और इसी कुछ कहता भी नहीं था. इसी मतलब अमेरिका का प्रेसिडेंट उस समय. तो ये चीज को समझो सर. ये पॉइंट क्लियर हुआ सर, डोमेस्टिक सोशियो पॉलिटिकल बेस फॉर नॉन अलाइनमेंट. अब आते हैं कि सर, वाज नॉन अलाइनमेंट अ टूल ऑफ मटेरियली वीकर नेशंस और genius of the indigenous people to advance national interest? Examine the normative ethos of non-alignment through the prism of identity in international politics. दो सवाल है. पहला सवाल है कि सर, वाज नॉन अलाइनमेंट अ टूल ऑफ मटेरियली वीक नेशंस और जीनियस ऑफ द पीपल टू एडवांस नेशनल इंटरेस्ट? देखो सर, वन थिंग इज वेरी क्लियर बेटा. नॉन अलाइनमेंट जितना हमने अभी पढ़ा, saying that if it is a tool of materially weaker nations, then this perspective is a way of looking at the non-alignment states through the Western prism. The Western countries will prefer to look at India and other non-aligned countries as materially weaker states. But sir, through the intellectual drivers and different sources of non-alignment that we have just talked about, we have seen that non-alignment is basically a genius of the indigenous people who wanted to have a right to self-determination, who wanted to basically create their own space in the bipolar world, who wanted to at the same time ensure that they have an independent economic path, who wanted to ensure that the resources are not diverted from development to military, and who also wanted to ensure very clearly that the dialogue is given the primacy to solve all the problems. But sir, it is all dependent upon which lens you are using to view non-alignment. A Westerner will always see non-alignment as a tool of the materially weak nations. One of the persons who actually said this statement was none other again but Alan Foster Dulles. He said in that non-alignment is a tool of materially weak nations.
This point was further built and even advocated later on by none other but Henry Kissinger. Both these people had the similar opinion. Because let's understand one thing, for both these people, non alignment actually meant neutrality. And any attempt by both these people who perceived non alignment as neutrality meant कि भाई it is not doing agenda running of US. समझ रहे हो आप? भाई, if India would have dropped non alignment, if India would have said that no, we are going to become an ally of US, then this question that whether non-alignment is a genius of the indigenous people or the non-alignment is basically a materially weak nation tool would have not come up only. Then it would have been very clear, sir, कि the world is divided into two bipolar blocks. क्योंकि there is no third way of looking at the world. So let's understand, sir. Non-alignment very categorically stated as a genius of the indigenous people that we are going to produce an important normative ethos. See the next question, sir. Examine the normative ethos of non-alignment through the prism of identity. Normative ethos. What is the normative? पहली बात तो what is the meaning of the word normative? Normative means something which is prescriptive. Norm, prescriptive. अब sir, what is the normative ethos? The normative ethos is, very importantly, that these non-aligned countries went on to say that the world cannot be seen only through the prism of bipolar politics. Normative ethos that the non-aligned countries tried to promote was an ethos that there are different shades of gray. Every situation in the world demands independent dissection. The normative ethos that we tried to portray was that let's not create a world which looks at every situation either through the communist or capitalist lens. Let's create a world where we are able to look at the merit of the situation first and then take upon a call as to how that particular event has to be reacted upon. So what are non-aligned countries trying to say? They are trying to say कि sir, let's not be rigid with the normative ethos. कि every situation has to be examined only through the bipolar prism. So इस context में अगर आप देखो तो सर ये कहना गलत नहीं होगा ना कि भाई non-aligned countries presented a normative ethos that reflected rich diversity. Why rich diversity? Diversity because sir, we are not looking at the world only through black and white. In fact, we are saying that every situation has diverse ways of looking at it. So let's respect the diversity. और सबसे बड़ी बात देखो सर, जब हमने ये बात बोली कि we will look at it through diversity, this diversity as a point was emphasized by non-aligned countries also because the non-aligned countries had their domestic identities which were also reflections of that diversity. By even if, for example, Egypt was a country which was a member of non-alignment, even if Egypt was an Islamic country, sir, Egypt at that time accepted that I can be Islamic yet secular. Yet secular. India, for that matter, was a shining example of this secular. कि भाई our domestic identity also does not mean conformity or uniformity over only one thought. आप इस चीज को समझो ना सर, घूम फिर के बात कहाँ पे आ रही है कि सर इट इज अगेन द जीनियस ऑफ योर इंडिजिनस पॉपुलेशन that the kind of socio-political base available which is there in the society is getting a reflection at the global stage. और ये पॉइंट मैं बार बार इसलिए एम्फोसाइज कर रहा हूँ बेटा बिकॉज द वे योर सोसाइटी इज कंस्ट्रक्टेड, योर कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ सोसाइटी becomes a mirror of your international image.
इसी रीजन से आप देखो कि सर एट दैट टाइम, अब आपको अगर मैं एक पॉइंट बोलूंगा आप समझोगे, कि एट दैट टाइम वी यूज टू कंडेम इजराइल फॉर देयर अग्रेशन ऑन एनी कंट्री, बट टुडे वी ओपनली सपोर्ट इजराइल because sir our social reflection is majoritarianism. There is only one way of looking at Indian society, that we are all Hindus. सिख धर्म भी जो है वो सनातन धर्म का पार्ट है। कहाँ से, किसने कह दिया सिख सनातनी है? ये कहाँ से आ गया ये? भाई मैं एक थोड़ा सा लिबरल सिख हूं, ये बात सुन लूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। पंजाब में जाके ये बात बोलोगे ना तो फिर वहां पे गोली गोली चल जाएगी। फिर बोलोगे कि अपने मुख्यमंत्री को बोलना मैं बच के भाग के आ गया। जब 56 इंच का सीना था तो फिर ये क्यों बोल रहा? सनातनी सिख, ये क्या मतलब हुआ भाई सनातनी सिख? सर ये जो आपकी सोशल रिफ्लेक्शन है ना सर, ये आपका एक इंटरनेशनल मिरर बनता है। आप देखो कि सर इसराइल के अंदर, अगर आप इसराइल की पॉलिटिक्स देखते हो तो इसराइल के अंदर इस मोमेंट पे देर इज अ हेवी क्रिटिसिज्म ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू। And one reason why there is a heavy criticism is because many people who are in Israel, who have been living in Israel for last many decades, do not approve of his policies. Because they say कि भाई if Israel existed as a nation because of United Nations, if Israel was created as a nation because of United Nations, then the same United Nations has given the liberty even to the Muslims to have an Arab Palestine of their own. So how can you say कि Arab Palestinians have no right to live? By when the larger thought process was of two-state solution, Benjamin Netanyahu is not accepting it. He says there will be only one state, that is the Jewish state of Israel. बात तो वही होगी ना सर, अस वर्सेस देम वाली। अब आप समझ रहे हो कि क्यों इतना वो एक भक्त मंडली में इतना भाईचारा इसराइल को लेके होता है? आप चीज को समझो। तो यहां पर योर सोसाइटी इज ऑलवेज अ मिरर सर। अच्छा, और कितनी आयरॉनिकल पैराडॉक्सिकल बात है, ये कंट्री जो ओपनली खड़े होके मीडिया में नैरेटिव चला रही है कि वी सपोर्ट इसराइल, पार्लियामेंट में रिप्लाई देती है कि वी स्टैंड फॉर टू स्टेट सोल्यूशन। जयशंकर ने बोला है पार्लियामेंट में, फरवरी में स्टेटमेंट है उसका, नेट पे जाके देख लो आप। पार्लियामेंट में उसने क्वेश्चन आर में रिप्लाई किया। एक क्वेश्चन पूछा गया था उससे कि भाई हैज इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स इसराइल चेंज्ड इन द रीसेंट टाइम विद द काइंड ऑफ थिंग्स एंड द स्टेटमेंट्स दैट आर कमिंग अप। स्टेटमेंट का रिस्पॉन्स आया, मैं डाल दूंगा अभी टेलीग्राम पे क्लास के बाद, आप पढ़ लेना उसको, कि नो इंडिया स्टैंड्स कंटिन्यूअसली फॉर द टू स्टेट सोल्यूशन। आप भी गूगल पे 1 मिनट में सर्च करोगे मिल जाएगा। इट्स अ वॉर ऑफ नैरेटिव सर, सोशल मीडिया। चलो वो एक अलग इशू है, बट ये चीज आपको क्लियर हुई सर कि व्हाट आर द नॉर्मेटिव ईथोस एंड हाउ डिड द नॉर्मेटिव ईथोस केम आउट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज द आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। दिस थॉट इज क्लियर टू यू? अब आते हैं कि भाई नॉन अलाइनमेंट इज डॉक्ट्रिनल विदाउट बीइंग अ डॉक्ट्रिनायर। डिड नॉन अलाइनमेंट फेल बिकॉज इट वाज टू लार्ज? सर डॉक्ट्रिनल और डॉक्ट्रिनायर में क्या फर्क है? लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट सर। सर व्हेन वी से नॉन अलाइनमेंट इज डॉक्ट्रिनल, डॉक्ट्रिनल मींस कि it stood for certain ideas. Doctrinaire means all those ideas were noted down on a piece of paper. Now let's understand the difference. Did non-aligned countries ever prepare a document stating that these are the points that non-aligned countries will only stand for? Have you ever come across such a document? Never. That proves one thing. That proves that non-alignment was number one doctrinal but not doctrinaire. Doctrinaire means there is a written document. Doctrinal means that you have certain ideas you subscribe to and you stand by. ये पॉइंट पहले क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, डॉक्ट्रिनल वर्सेस डॉक्ट्रिनेयर। एक पॉइंट अब क्लियर है सर, कंसेंसस है कि नॉन अलाइनमेंट नेवर क्रिएटेड एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट।
अच्छा, अब अगर मैं बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, अगर मैं यहाँ पर यही चीज आपको बोलूं कि इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी इज डॉक्ट्रिनल बट नॉट डॉक्ट्रिनर, ट्रू और फॉल्स? इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी इज डॉक्ट्रिनल बट नॉट डॉक्ट्रिनर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑन द अदर हैंड इज डॉक्ट्रिनर बट नॉट डॉक्ट्रिनल, ट्रू या फॉल्स? India's Act East policy is doctrinaire but not doctrinal. हाँ जी, Act East policy doctrinaire but not doctrinal. False है सर. भाई, have you seen a document that this is what the Act East policy is going to be? Has the government ever published? In fact, सर, ये क्वेश्चन आगे जाके आपको आ सकता है कि the entire Indian foreign policy per se since non-alignment till strategic autonomy has been doctrinal and not doctrinal. We have always stood for key ideas. The beauty is that we have never tried to express any idea. आपको याद होगा सर, लास्ट ईयर भी जब मैंने सिक्योरिटी इश्यूज पढ़ाया था, ये बात आपको बोली थी, इंडिया लैक्स अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी. We have key ideas about how we want to tackle various security issues, but we don't have any document today to ascertain that this is the path we are going to take to address that security challenge. Sir, India is a country that has largely refrained from being a doctrinaire and has always been a country which has generally preferred to be doctrinal. अब क्वेश्चन उठता है व्हाई. वो इसमें भी है सर. व्हाई? बिकॉज when you are doctrinal and not doctrinaire, that means when you only focus on key ideas instead of writing them down, you are able to evolve as per the changing situation. Had India become, or had India proposed non-alignment to be doctrinaire, what would have happened as a consequence? You know what would have happened as a consequence? Had India become doctrinaire on non-alignment, sir, India would have never evolved the non-alignment and given it new directions as it gave over a period of time. और आपको एक बात मैं बता दूं, non-alignment basically began with seeking independence for other nations, and a non-alignment eventually progressed to become a tool for economic cooperation. Sir, this evolution from seeking independence to economic cooperation was possible only because of what? Because India was doctrinal and not doctrinaire, sir. क्योंकि we had never written down anything. इसी रीजन से समझो सर, look east policy, act east policy. We have never come out with a doctrinaire on look east or act east policy because we have always tried to evolve. सर, आप सोचो एक मिनट के लिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी केम इन 2014, ये सबको पता है. If Act East policy came in 2014 and had we prepared a doctrinal document about it, how would we have adjusted something like Indo-Pacific that came in 2017? Would we be in a position to adjust? Answer is no. Your document would have become redundant. Now do you get why? Now do you understand why we don't prefer to go doctrinaire? कल को ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि what prevents India to become doctrinaire and why India remains focused on being doctrinal. तो ये याद रखना. Because, sir, when you are doctrinal, at that time, you can experiment with key ideas. You can evolve as per the changing situation.
This is what we did in non-alignment. This is what we did with Look East policy. This is what we are doing with Act East policy. This is what we did with Connect Central Asia policy. This is what we do with Look West policy. We evolve. We are able to have more freedom and liberty to experiment. और देखो, घूम फिर के मैं अगर आपको फिर से पीछे लेके जाऊं तो ये पॉइंट फिर रिलेट होता है सर. दिस इज द जीनियस ऑफ द इंडिजिनस पीपल. Have diversity. Because when you write something, sir, then you are bound to follow that. अब आपको अगर मैं एक बड़ा फंडामेंटल सा पॉइंट बोलूंगा ना, तो आपको सुन के हंसी भी आएगी, लेकिन चीज समझ भी आएगी कि दिस इज द रीजन दैट एक्सप्लेन्स दैट व्हाई बीजेपी प्रेफर्स टू हैव मनुस्मृति एंड कांग्रेस प्रेफर्स टू यूज कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड एंड बेसिकली मेड चेंज्ड, बट मनुस्मृति इज अ डॉक्यूमेंट दैट कैन नॉट बी चेंज. कभी सुना मनुस्मृति में अमेंडमेंट? कौन करेगा अमेंडमेंट? ब्राह्मण जी करेंगे, उनका स्टेटस ही चला जाएगा. कभी नहीं होगा. अब आपको समझ आ रहा है सर? totalitarianism, authoritarianism versus why some people advocate liberalism in this scenario. और सबसे बड़ा पॉइंट अगर आप देखो एक सोशल पर्सपेक्टिव, does Hinduism today have only one text as the sole text? It does not have. This gives flexibility to a Hindu to evolve in his own way. This is the reason why, sir, there is no one text which has been attributed in Hinduism as the sole text that is responsible for everything. This was an attempt made by the British, by the way, to attribute one text only to the Hinduist population. And this was done in the form of identifying Manusmriti as that text. जबकि Manusmriti, even in the religious hierarchy, does not fit anywhere, sir. Bhagavad Gita is on the top. आप अगर बोलते ना ब्रिटिश की भगवत गीता को हम कह रहे हैं, एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि भाई हिंदुइज्म के साथ जुड़ी है, तब समझ भी आता. आपने जान पूछ के मनुस्मृति उठाई सर, क्योंकि उसमें कुछ लाइनें कुछ कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई हैं जिनको आप ट्विस्ट कर सकते. आप गीता की लाइनों को ट्विस्ट नहीं कर सकते सर, उनका तो मीनिंग सेम है. तब भी वही था, आज भी वही है. ये कॉन्स्पिरेसी है सर देश के खिलाफ. चलो वो हमें उसमें नहीं जाना, उसके लिए वो राहुल गांधी है और मोदी है लड़ने के लिए. पर आप फर्क समझो सर, हम फॉरेन पॉलिसी में डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने से हिचकिचाते हैं. नॉट दैट कि हमें डर लगता है कि हम लिखेंगे नहीं. हमें लिखने से कौन रोक सकता है सर? लेकिन हम नहीं लिखते. सिक्योरिटी के चैलेंजेस में भी हम डॉक्ट्रिन को इसलिए लिखते नहीं है सर, क्योंकि जो कश्मीर का सिचुएशन है वो नॉर्थ ईस्ट नहीं है, जो नॉर्थ ईस्ट का सिचुएशन है वो पंजाब नहीं है, जो पंजाब का सिचुएशन है वो नक्सलाइट बेल्ट नहीं है सर. हर जगह पे एक इवॉल्विंग चेंजिंग थ्रेट है, हर जगह पे. क्लियर हो गया जी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिबेट है, और ये मैंने आपको बता दिया बेटा, ये कल को लुकी टैक्टिक्स पॉलिसी में भी पूछा जा सकता है, और ये एक जेनेरिक इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है. तो दोनों जगह पे आपको थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए. अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये उठता है कि सर, डिड नॉन अलाइनमेंट फेल बिकॉज इट वाज टू लार्ज? देयर इज वन व्यू लाइक दिस. दैट व्यू सेज कि yes, non alignment failed because it was too large. And when we say it was too large, you know what is the meaning we are trying to communicate? We are trying to say कि non alignment was too doctrinal. मैंने जो वर्ड यूज किया वो है टू लार्ज. कल को यूपीएससी वो टू लार्ज हटा के अगर बोल दे टू डॉक्ट्रिनल, तो आंसर वही है सर, कि नॉन अलाइनमेंट फेल्ड बिकॉज इट वाज टू डॉक्ट्रिनल. टू डॉक्ट्रिनल का मतलब है कि सर वी स्टार्टेड लुकिंग एट टू मेनी आइडियाज. वो कॉलेज में नहीं होते जो फर्स्ट ईयर में नए नए लड़के आते हैं, और जब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कॉलेज में कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज करने की, तो वहां पर ग्रुप में एक ऐसा नमूना पक्का मिलता है हर ग्रुप में जो हर दो दो मिनट में नए नए आइडिया देता रहता है. ये गलती हमारे साथ नॉन अलाइनमेंट में हुई थी सर. हम जब ग्रुप में बैठते थे ना, नॉन अलाइन मीटिंग होती नहीं हमारी, वहां पे बड़ी सारी कंट्री आ जाती, सब नए नए आइडिया दिए जा रहे दिए जा रहे दिए जा रहे. ये गलती हमने ओवरकम करी लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी में. हमने कहा कि ठीक है भैया, की आइडियाज विल एक्सपेरिमेंट विद देम, बट इट्स नॉट दैट दोज की आइडियाज कैन रैपिडली चेंज एवरी सिंगल डे. क्योंकि देखो, नॉन अलाइनमेंट में प्रॉब्लम पता है क्या थी सर? द डिफरेंस बिटवीन नॉन अलाइनमेंट एंड इंडियाज यूनिलैटरल लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज कि सर, नॉन अलाइनमेंट हैड मेनी अदर कंट्रीज आल्सो. India's point of view was just one point of view. Look East and Act East policy में the difference is our viewpoint is our only viewpoint. There is no other country that is having their viewpoint.
So to some extent, it is not wrong to argue that a non-alignment failed because it became too large. और अगर हम उसी को रिफ्रेज करें तो मैं ये कहूंगा कि नॉन अलाइनमेंट फेल्ड बिकॉज इट वाज टू डॉक्ट्रिनल, टू मेनी न्यू आइडियाज, टू मेनी की आइडियाज, टू मच ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या होती है? व्हेन यू हैव टू मेनी आइडियाज टू एक्सपेरिमेंट ना सर, देन यू आर अनेबल टू एग्जीक्यूट एनी आइडिया. फिर एग्जीक्यूशन पुअर होती है. और नॉन अलाइनमेंट की हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा सर, हमने हर चीज एक्सपेरिमेंट करी, बहुत कुछ करा, लेकिन हमने कुछ अचीव नहीं किया कॉन्क्रीटली. इसी रीजन से वो एक टॉपिक आता है जो आपके सिलेबस में भी है कि रेलेवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट टुडे, कि भाई क्या आज ये कुछ कर भी सकती है? क्योंकि जब थी तब क्या किया, सिर्फ आइडिया ही आइडिया देते रहे. आप समझ रहे हो? अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि सर व्हाट वर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन ब्रीफ सर. सो सर एम ऑफ नॉन अलाइनमेंट वाज नंबर वन, ये फैक्चुअल है, लिख लो, आपको लिखवा रहा हूँ. एम्स पहले लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव लिखेंगे. एम नंबर वन इज रिस्पेक्ट यूएन चार्टर. नंबर टू, रिस्पेक्ट यूएन आइडियल्स एंड गोल्स. नंबर थ्री, रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल सोवरेनिटी. नंबर फोर, नो कलेक्टिव डिफेंस लाइक नाटो और वार्सो पैक्ट. नेक्स्ट, नो डोमेस्टिक इंटरफेरेंस. नेक्स्ट, नो प्रेशर पॉलिटिक्स. नेक्स्ट, सॉल्व इश्यूज थ्रू पीसफुल डायलॉग. सॉल्व इश्यूज थ्रू पीसफुल डायलॉग. ये एम से. ऑब्जेक्टिव्स लिख लो. अचीव वर्ल्ड पीस. फोकस ऑन डेवलपमेंट देन डाइवर्जन ऑफ रिसोर्स टू मिलिट्री. फोकस ऑन डेवलपमेंट देन डाइवर्जन ऑफ रिसोर्स टू मिलिट्री. नंबर थ्री, क्रिएट अ वॉइस इन द बाइपोलर वर्ल्ड. आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वाला पॉइंट, कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए. क्रिएट अ वॉइस इन द बाइपोलर वर्ल्ड. एंड नंबर फोर, change the bipolar world to suit domestic national interest. Change the bipolar world to suit the domestic national interest. ठीक है जी. What were the different phases of non-alignment? Use the scholarly prism to examine the phased engagement, sir. Again, factual, you can please write down. Scholar here is Sujata Mohanty. Sujata Mohanty. She has given different phases of non-alignment. First phase, objective was to seek autonomy in bipolar world. Second phase, right to self-determination for colonial countries. Third, create domestic political structures for autonomy. Autonomy.
Fourth, articulate national interest. Fifth, collectively evolve a voice at the United Nations. Collectively evolve a voice at the United Nations. Next, resolve disputes peacefully. Next, new international economic order. New international economic order for economic development. For economic development. अब आते हैं जी स्कॉलर पे. स्कॉलर का नाम है सूर्य प्रसाद. सूर्य प्रसाद says कि सर नॉन अलाइंड कंट्रीज focused on economic justice. Economic justice means that he says कि sir they tried to keep themselves away from what is called as military politics, solely focused on what is called as economic development. Solely focused on economic development. ठीक है. Next scholar is Hudson. Hudson, sir. Hudson. He says a very important point, sir. He says कि one reason why non-aligned countries could not succeed is because they could not evolve consensus on majority of the issues. And this particular lack of consensus on various issues was exploited by Western countries. मैंने अभी आपको बताया ना सर, नॉन अलाइनमेंट वाज टू लार्ज. They were too doctrinal, too many key ideas to experiment. हडसन यही कह रहा है कि countries basically could not achieve consensus on multiple issues. And this was exploited by the West. Because whenever the Western countries saw that non-aligned countries are unable to basically evolve consensus on a specific issue, they would try to give their opinion and thereby try to push that non-aligned country out of the orbit. So non-alignment therefore remained like a very shaky boat in a rough ocean. ये analogy देता है वो हडसन. Shaky boat in a rough ocean. छोटी सी नाव लेके जब आप चले जाते हो एक रफ ओशन में, स्लम डॉग मिलियनेयर वाली, शेर भी होता है उसमें, मोदी जी, तो फिर दिक्कत आती है. ठीक है. अगला क्वेश्चन है सर, वो भी फैक्चुअली है. एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन नॉन अलाइनमेंट, असर्टेन हाउ द इंडियन कंट्रीब्यूशन हैज बीन अ ब्लेंड ऑफ आइडियलिज्म एंड रियलिज्म थ्रू द स्कॉलरली प्रिज्म. सर देखो, लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, जो इसमें समझने का पार्ट है, फिर मैं आपको लिखवा भी दूंगा सर. जब हम बात करते हैं यहाँ पे आइडियलिज्म एंड रियलिज्म की सर, तो आइडियलिज्म एंड रियलिज्म में डिफरेंस प्राइमरली ये आता है इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर कि भाई at how many places India, when we say it displayed idealism, means at how many places did India display the doctrinal approach of non-alignment, of standing up to the opinion that they took. And realism in this context means कि in what scenarios did India, despite having non-alignment and certain ideals, accepted ideals given by others. So idealism and realism here that we are talking about in the context of non-alignment is not the idealism, realism that we talk in the context of international relations. वो theory of idealism, theory of realism अलग है थोड़ी सी. हम बात कर रहे हैं idealism और realism non-alignment में, where idealism means
Idealism and realism, sir. Idealism means India is saying that this is my viewpoint, I stand for it. Realism, on the other hand, means in this context that India is accepting that there is a viewpoint given by another nation. I make it my viewpoint also. Getting the idea there? So, throughout India's non alignment and the different ways in which we contributed to it, we have reflected a blend of the two. Now, how has that happened? Let us look at it. Scholar's name is Sir Itti Ibrahim. Itti, I-T-T-Y, Itti Ibrahim. Itti Ibrahim says, कि sir, when India fought for imperialism, colonialism, and colonialism under non-alignment, that was basically a case of idealism, because that was what India also stood for. That's our viewpoint. But sir, under non-alignment, India also fought for ensuring that the world is free from apartheid. That was a case of realism, sir. India was never a victim of apartheid, sir. हमारे यहाँ पर अपार्थाइड के केसेस नहीं थे, अपार्थाइड की सिचुएशन भी नहीं थी, पर उसके बावजूद सर हमने अपार्थाइड को लेके उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, क्योंकि अफ्रीका के कई देशों में अपार्थाइड था और हमने सोचा कि उनका गोल हमारा गोल है. इस कॉन्टेक्स्ट में वो एक केस बना रियलिज्म का. ये चीज क्लियर हुई थी आपको? अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे सर. इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट सर 1947-48. Sir, the fact that we fought Pakistan militarily because they intruded into our Kashmir illegally in 1947 is a case of realism. Why we say realism is because, sir, they initiated the fight, we did not. And we responded to the fight after that. हमने कुछ चूड़ियां नहीं पहनी हुई यहाँ पे. तुमने फाइट शुरू करी है, फिर हम पीटने गए. बट सर उसके बाद इंडिया रिफ्लेक्टेड आइडियलिज्म बाय टेकिंग द कश्मीर इशू टू यूएन, की सीकिंग द रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट थ्रू डायलॉग एंड इंटरनेशनल यूएन पार्टिसिपेशन. अब वो अलग बात है कि सर यू कैन डिबेट ऑन दैट, कि was it prudent for us to do that or was it not prudent for us to do that, should have we resolved that issue bilaterally, what was the need to take it international and all. That is a different debate, but we are looking at through the examples of idealism, realism. Third example here is sir Cuban Missile Crisis. Sir, during the Cuban Missile Crisis, India very categorically told Russia on the principle of idealism that what you are doing is wrong, sir. You can't keep missiles in Cuba pointed at America, sir. गलत है. रशिया ने कहा कि क्यों इसने जो टर्की में रखे हैं वो सही है. हमने कहा नहीं, वो भी गलत. पर तुम क्यों कर रहे हो? And sir, after Cuban Missile Crisis, when partial test ban treaty was proposed, after the Cuban Missile Crisis, when partial test ban treaty (PTBT) was proposed in the world, which was proposed by others in the world, we accepted it. We ratified PTBT. India was a country that ratified the partial test ban treaty, even though India never contributed to its development, sir. और हमारे सामने एक ट्रीटी आई जिसको देख के हमें ये लगा कि नहीं, दिस ट्रीटी विल प्रिवेंट द रिसोर्स डाइवर्जन फ्रॉम डेवलपमेंट टू मिलिट्री, हमें ये चीज साइन करनी चाहिए, अच्छी चीज है. 4 साल के बाद जब एनपीटी आई फिर हमने नहीं करी, वो अलग बात है. मना कर दिया, हम नहीं करेंगे. 1971 सर, नेक्स्ट एग्जांपल. India attacked East Pakistan because it was used as a base to subvert and destabilize India. And we attacked East Pakistan only when Pakistan first attacked us. The fact that, sir, India had 90,000 plus prisoner of wars, but we released them, is an example of India's realism, sir.
We could have kept those prisoner of wars to bargain, but we know, sir, that bargaining is never going to give credence to India's global image. Prisoner of wars, as per international statutes, must be returned to the states. That is what we exactly did. We never tried to use them as a bargaining chip. That is why, sir, today under the cold start doctrine that our military has, we have decided to capture Pakistani territory and then use that territory as a bargaining chip is a different thing, sir. But not the people, sir. और हमारे पास कोई यार आबादी कम है, मतलब 90,000 और ऐड कर लो, यही रह गया। बड़ी मुश्किल से अभी हम जो है मोदी जी के नेतृत्व में हम वर्ल्ड के नंबर 1 पॉपुलस कंट्री बने हैं यार। और ये चीज हमें पहले थोड़ी अचीव करनी थी। फिर क्रेडिट सारा मोदी जी को कैसे मिलता? ये तो मोदी जी की दया है कि उन्होंने लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन में लोग फुर्तीले हो गए। पहले 4 महीने नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स से इंस्पिरेशन, फिर प्रेगनेंसी, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे भी वही चीजें देखी, अश्लील और अनशन, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू प्रैक्टिस एंड कॉन्सिक्वेंस पोस्ट कोविड। जितने अनफॉर्चुनेटली लोग कोविड में गए उससे 5 गुना ज्यादा हमने रिप्रोड्यूस करके जो है पॉपुलेशन को आउट बैलेंस कर दिया। जाएगा लेकिन दूसरा आएगा, ये फिलॉसफी थी। ऐसे हमने कोविड टैकल किया सर, मजाक नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है देश का। तो ये चीज हुई सर, ठीक है जी। व्हाट वर दी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट सर? फर्स्ट पॉलिटिकल अचीवमेंट सर, यू कैन राइट डाउन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स रेस। ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स रेस हमने क्यों बोला? क्योंकि सर वी वेरी कैटेगोरिकली स्टेटेड सर कि रिसोर्सेज विल नॉट बी डाइवर्टेड फ्रॉम डेवलपमेंट फॉर द पर्पस ऑफ यूसेज ऑफ मिलिट्री। सेकेंड इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ इंडिया एट द पॉलिटिकल लेवल वाज कि सर इंडियन ओशन लार्जली रिमेन्ड, if not fully, largely remained free from power politics. Sir, Americans were able to create a base in Digo Garcia, but that was very, very far away from the territory of India. It was more near the African territory, Mauritius side, but not somewhere in, let's say, Maldives or say Sri Lanka. श्रीलंका ने जो हरकत करी थी 71 में, उसका खमियाजा उसने भुगता है फिर। और ये कहना कि इंडिया जो है सर एक नॉन इंटरफेयरिंग कंट्री है, वी नेवर इंटरफेयर इन दी अफेयर्स ऑफ दी अदर कंट्री, ये डिबेट आजकल ज्यादा चल रहा है जब से वो निज्जर पन्नू वन्नू चल रहा है न्यूज में। सर हमारा इतिहास रहा है इंटरफेरेंस इन अदर कंट्रीज का। द फैक्ट दैट यू कुड गो टू श्रीलंका, अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड गेट अ 13th अमेंडमेंट एडेड देयर वे बैक इन द 1980s इज सफिशिएंट इनफ फॉर द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ नॉन इंटरफेयरिंग यू आर। तो ये बातें बोलना है कि हम तो दूसरे कंट्री के अफेयर्स में सर इंटरफेयर नहीं करते, मतलब ठीक है बोलने के लिए अच्छा लगता है सर, लेकिन देश का इतिहास कुछ और ही है और सब देश पढ़ते हैं इतिहास में। सबको पता है कि 13th अमेंडमेंट श्रीलंका की कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया नहीं डाला है। तो ये चीज आपको एनीवे याद रखनी कि इंडियन ओशन लार्जली रिमेन्ड फ्री फ्रॉम व्हाट वी से इज पावर पॉलिटिक्स। थर्ड इंपॉर्टेंट अचीवमेंट इज सर कि वी वर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ नॉन अलाइनमेंट वेरी क्रिटिकल ऑफ इजराइली वायलेंस। That proves the point very importantly that India always asserted and told Israel that dialogue is the only way out. सर इसराइल ने जब जब लड़ाइयाँ लड़ी हमने क्रिटिकली उसको ओपोज ही किया। हमने कहा कि जो आप कर रहे हो गलत है, सोल्यूशन जो है टू स्टेट सोल्यूशन हैज टू बी फाउंड पीसफुल। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट ये है सर कि आर एंटी अपार्थाइड कैंपेन गेव अस रिजल्ट इन साउथ अफ्रीका से। देखो साउथ अफ्रीका के साथ एक इमोशनल कनेक्ट भी था, वहां पर गांधी जी गए थे, ट्रेन टिकट लेके बैठे थे और भाई साहब टिकट वाले व्यक्ति को टिकट से ट्रेन से निकाल देना,
जो गांधी जी के साथ उस समय ये हादसा हुआ ना भाई साहब, ये आज की डेट में हमारे देश में बदला इसका आरपीएफ लेती है, जो चलती हुई ट्रेनों से लोगों को फेंक देती है। ठीक है ना? तो हम नहीं भूले। गांधी जी ने टिकट ना ली होती और वो कर रहे होते ये काम, तो अलग बात थी। गांधी जी एक इंस्पिरेशन थे साउथ अफ्रीका में, क्योंकि जिस पर्पस के लिए वो गए थे उस पर्पस के बाद उन्होंने ओवरस्टे किया। इसकी वजह से आज की डेट में अगर इंडियंस कनाडा में जाके अब ओवरस्टे करते हैं या ब्रिटेन में जाके अपना पासपोर्ट फाड़ देते हैं, ये इंस्पिरेशन गांधी जी से आई है कि पर्पस खत्म होने के बाद भी ओवरस्टे करके टेरिटरी में इलीगली रहो और फिर उसको ऐसा वहां पे नेक काम करके लीगल बना दो कि आपके पासपोर्ट को कोई पूछे ही ना। वहां पे जो है लोगों को एकजुट कर दिया, थोड़ा इधर उधर जो है प्रोटेस्ट वगैरह करा दिए। तो सर गांधी जी के पास टिकट थी सर, बिना टिकट के होते तो एक अलग बात थी। टिकटलेस ट्रेवलर नहीं थे गांधी जी, इतनी मर्यादा थी उनमें। और गुजरात के थे, वो चाहते तो ट्रेन खरीद लेते। डैडी के पास पैसा बहुत था, उनके पास पोरबंदर में जो उनके डैडी थे ना भाई साहब, वो दीवान वहां पे, उन्होंने घर के अंदर बड़े दीवान भरे थे अपने। वो अलग बात है कि लड़के को उन्होंने फकीर बना दिया आगे जाके, कि झोला उठा के ही घूमता था पूरे देश में। और उन्हीं का एक पुत्र है आज की डेट में जो झोले वाला है। तो ये चीज को याद रखिए कि सर एंटी अपार्थाइड कैंपेन ऑफ इंडिया इन साउथ अफ्रीका गेव रिजल्ट, बिकॉज सर इन 1994 apartheid was officially abolished by South Africa. Apartheid was officially abolished by South Africa in 1994, sir. That was a very big political achievement of India's non-alignment, sir. Political achievement, sir. तो ये चीज आपको याद रखनी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सर व्हाट आर द इकोनॉमिक अचीवमेंट्स एनालाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। Sir, new international economic order is basically an idea that the non-aligned countries proposed in the middle of the Cold War period, and that too at a time when most of the other objectives and the ideas that they were doctrinally trying to experiment came to an end. For example, initial focus was on basically getting the countries liberated from colonial rule, वो हो चुका था। डिकोलोनाइजेशन हो गई, इंपीरियल ऑर्डर जो था वो क्रश करवा दिया। इसके बाद नॉन अलाइंड कंट्रीज वर डायरेक्शनलेस, सो दे नेवर न्यू कि भाई अब इंडिपेंडेंस भी अचीव हो गई, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन भी हो गया, कंट्रीज आजाद हो गई, इंपीरियलिज्म के खिलाफ भी लड़ाई लड़ ली, अब क्या? फिर आइडिया आया इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं। सो टू डू दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे proposed a concept called new international economic order, NIEO. Under this new international economic order, which began in 1960s and 70s, few things came up. The first important thing that came up was that let every country focus on economic self-reliance. तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में सारी कंट्रीज को बोला गया कि अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तब से चल रहा है ये। दूसरा, ये बोला गया कि सर वी विल ऑल्सो ट्राई टू स्ट्राइव फॉर कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस। कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस। अब देखो सर, जब हम बात करते हैं ना कि सर नॉन अलाइनमेंट फेल्ड, वन रीजन इज दिस ओनली, ये आपके सामने आ गया, ये NIEO के पॉइंट को यूज करना। अब आप एक जगह पे आप बोल रहे हो इंडिविजुअली बिकम सेल्फ रिलायंट, फिर दूसरी जगह पे आप बोल रहे हो जी कलेक्टिवली सेल्फ रिलायंट। भाई यू कांट बी बोथ। अ कंट्री विच वांट्स टू बी इंडिविजुअली सेल्फ रिलायंट विल नॉट ट्राई टू बेनिफिट एनी अदर कंट्री। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में कि भाई ट्रम्प टुडे वांट्स टू हैव अ पॉलिसी दैट अमेरिका विल माइंड इट्स ओन बिजनेस। We will collectively not grow, sir. We will grow individually on our own and we will counter China. How can you say कि we will grow and then we will collectively help others also to grow? ये तो वही बात होगी ना कि ट्रम्प विल कंटिन्यू टू हैव ट्रेड रिलेशन विद चाइना एंड येट से कि ओके आई विल आल्सो ग्रो। दैट इज नॉट पॉसिबल सर। सो कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। और ये तब हुआ बिकॉज अगेन बीइंग डॉक्ट्रिनल सर, too many ideas to experiment, no clarity on what exactly to follow. अच्छा अब देखो अगला सर,
इसमें फिर हमने ये नई चीज बोली कि सर देयर हैज टू बी अ ग्लोबल अटेम्प्ट टू रिड्यूस द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस। और ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए था सर कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस वर फ्लक्चुएटिंग टू मच, and most of these non-aligned countries were either oil exporters or oil importers. Importers were the ones who basically were affected more than the exporters. So importer countries argued that we need to have some stability on the crude oil price. ये एक पॉइंट पे चर्चा की गई। इसके बाद एक पॉइंट और ये आया कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज मस्ट प्रोवाइड aid to non-aligned countries as a matter of principle। मैटर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब ये है सर कि भाई आप डेवलप्ड हो, आपके पास पैसा है, दान करो। आपको पता होगा ना सर, जब वो सूर्य ग्रहण होता है तो वो गली गलियों में नहीं शोर मचाने नहीं आ जाते, दान करो, ग्रहण है आज, दान करो, ग्रहण का दान करो। अरे ग्रहण हमने किया, हमारी जेब की हल्की कर रहे हो भाई तुम? नहीं ग्रहण है तो दान करो भाई, ये क्या मतलब हुआ? तो नॉन अलाइंड कंट्रीज के साथ भी यही था। वेस्टर्न कंट्रीज को जाके कह रहे तुम डेवलप्ड हो, हाँ है, तुम दान करो। वो कह रहे क्यों करें? नहीं क्योंकि तुम डेवलप्ड हो। भाई कोई लॉजिक नहीं है सर इस चीज में। और प्रॉब्लम पता है क्या है? देर आर सम पीपल हु आर्ग्यू कि सर दिस पोजीशन ऑफ द नॉन अलाइंड कंट्रीज हैज रिमेन्ड टिल टुडे। एंड ये क्लाइमेट चेंज के डिबेट में आप देखो ना, यही तो होता है, अभी भी वही भूखी नंगी अप्रोच। वेस्टर्न कंट्रीज आर नॉट प्रोवाइडिंग अस विद टेक्नोलॉजी। सर टेल मी वन थिंग, who is innovating that technology in the western countries that they are using today? All these Asian people. If India creates an ecosystem where there is a reverse brain drain, and instead of brain drain happening, if people start coming back to India from America to start doing business here, do you think that India will not be able to create globally competitive technologies to counter US? We can do that. तो ये सर मंगता टाइप एटीट्यूड जो होता है ना, मांगने वाला, जैसे घरों में भी कई बच्चे होते हैं तो पैसे ही मांगते रहते हैं जब मिल जाए। अब वो परवरिश के ऊपर भी होता है। अब जैसे मेरी घर में मेरे मामा है, मेरे मामा के दो छोटे बच्चे हैं, उनके उनकी लेट शादी हुई, मतलब लेट क्या, उसकी कई शादियां हुई, उसके बाद एक में वो फाइनली सेट हुआ, उसके बाद वो बच्चे बच्चे किए उसने। अब उसके बच्चे जो है मतलब 9th 10th में पढ़ते हैं, अब वो आ जाएंगे। अब दिसंबर में आ रहे हैं, मैंने तो अपने पैसे वैसे इधर उधर वैसे ही छुपा दिए, किताबों के बीच में रख दिए यहाँ पे। वो आते सर उनको उनकी जो माँ है, जो मेरी मामी है ना, उसने यही सिखा रखा है। एक तो वो मारवाड़ी है बेचारी। अब चलो उनका, उनकी परवरिश वैसी है, मांगते रहो, मतलब वो बच्चे ऐसे हैं, मिलेंगे, यो 100 का पन्ना दे दे, 100 का पन्ना दे दे। मैं कि भाई तू क्या बादशाह है क्या? मतलब बात कैसे कर रहा है, एक तो देख तू, 100 का पन्ना दे दे। सो इट्स ऑल्सो अबाउट दिस एटीट्यूड दैट वी हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दिस स्टेम्स फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट। बट इकोनॉमिकली दिस इज व्हाट वी वांटेड टू अचीव अंडर द एनआईईओ। ये चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं सर, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड? डू यू थिंक दैट नॉन अलाइनमेंट इज स्टिल रेलेवेंट और हैज इट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस? एनालाइज थ्रू द प्रिज्म ऑफ स्कॉलर्स। सर टू स्कॉलर्स दैट वी आर गोइंग टू यूज आर एपी राणा, एमएस राजन। एपी राणा, एमएस राजन, these two scholars have given two different views, sir. One view that they have given is कि sir non-alignment does not hold any relevance today because it was created during Cold War. It had certain aims and objectives which it has achieved. For example, it wanted to basically focus on anti-colonialism, wanted to focus on anti-imperialism, wanted to focus on anti-apartheid. It has achieved all of them. So considering the fact that non-alignment has achieved most of the goals for which it was created, one view they have given is that non-alignment does not hold any relevance in the contemporary world today. So as a result of which, any attempt to revive non-alignment, they say that it can be out of nostalgia. जैसे होता है ना कि आप अब बड़े हो गए हो, अब आप शिमला दोबारा गए, एक पॉइंट पे खड़े हो गए, आपको याद आ रही है
पापा याद है इस पॉइंट पे खड़े होके हम लोग जब पहले बचपन में आप लेके आते थे, मैं यहाँ से थूके फेंकता था नीचे देखने के लिए कि किसकी थूक पहले पहुंचेगी नीचे दोनों भाइयों में से। वो कहते हैं नॉस्टैल्जिया सर, पुरानी यादें। तो वो कहते हैं कि भाई एनी अटेम्प्ट टू रिवाइव द नॉन अलाइनमेंट इज नथिंग बट एन अटेम्प्ट ऑफ नॉस्टैल्जिया। तो वो कोई फायदा नहीं देगा। बट सर देयर इज एन ऑल्टरनेट व्यू। Alternate view argues कि sir today non-alignment is at a very crucial juncture of world history, very crucial juncture, and today it must be revived to tackle certain issues. For example, number one, sir, there is an attempt of countries to fight a hegemonic war. America is fighting a hegemonic war with China. China is trying to displace America. America is trying to protect its hegemony. So, in this hegemonic war, there is an attempt for non aligned countries to promote a stable and a peaceful world. Pehla point, sir. Second point. Today, there is a need to revive non alignment because the world is witnessing rise of minilateral groupings. While these minilateral groupings which are there, like Quad, Indo-Pacific, etc., are like-minded groupings, but the problem is that most of these mini-laterals are exclusive clubs and are not representative of a democratic global architecture. बड़ा important point है ये भाई। most of these mini-laterals are what? Exclusive clubs. क्वाड में 4 भाई बैठेंगे, ऑकस में 3 भाई बैठेंगे, बाकी दरवाजे से बाहर खड़े हो जाओ। So, sir, these kind of mini laterals which are there, they do not represent a global democratic order. So, non alignment can be revived here to ensure that there is global democratic world order. ये चीज क्लियर हुई थी आपको? थर्ड पॉइंट सर, द वर्ल्ड इज गोइंग बैक टू पोलैरिटी थीसिस। पोलैरिटी थीसिस क्या मतलब है इसका? कि भाई देर इज अगेन अ फाइट बिटवीन यूनिपोलर बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. Non-alignment can ensure a multipolar world. So non-alignment must be revived now, not to fight bipolarity, but to promote multipolarity. It must adopt and accept this new goal that is there in the present global history now. Number 4, under the rubric, RUBRIC, rubric means under the aegis of. Under the rubric of globalization, sir, there is an attempt to promote homogeneity. ये बात तो फैक्ट है ना सर? देयर इज एन अटेम्प्ट टू प्रमोट होमोजिनिटी. अभी मैंने आपको बताया कि सर अमेरिका वांट्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू थिंक एज पर द अमेरिकन वे. चाइना थ्रू BRI वांट्स कंट्रीज विच आर मेंबर्स ऑफ द BRI टू थिंक एज पर चाइनीज वे. It is in this backdrop, sir, that non-alignment can be promoted to reflect diversity. Because non-alignment always stood for diversity. Non-alignment always stood for the fact that there are different ways of looking at the world. American and the Chinese way are not the only way. Sir, diversity in international relation, not in gender. Non-alignment को ये नहीं करना, पता चले वो कल्चर शुरू कर दिया है जी कमला हैरिस वाला, वो नहीं करना है. Diversity in international relations. Gender is only male, female. There is no other gender. I am trapped. Sir, you need therapy. It's fine. It's okay. अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सर, नॉन अलाइनमेंट कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन UN रिफॉर्म्स. Because sir, UN today has become a very rigid institution.
refuses to reform. It has become that privileged European club. So non-alignment can play a very concerted role in putting pressure on the UN to reform. प्रेशर डालो यूएन पे, लाइन लगा दो सारी कंट्रीज की वर्ल्ड में कि जिसको प्रेशर आए यूएन के बाहर जाके करे, यूएन दबाव में आ जाएगा, देखो रिफॉर्म हो जाएंगे. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज सर इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स. दिस इज द नेक्स्ट एरिया वेयर सर you know non-alignment can play an important role, sir. It's an area that basically non-aligned countries have never explored. That is the area of what we call as environmental politics. समझ रहे हो आप? Climate justice. This is what we give as a role to non-aligned countries today. अब आता है सर what is the idea of NAM 2.0? Highlight the major features of the concept but through an analysis of scholars. Sir, NAM 2.0 was a document prepared by a person called Sunil Khilnani. Khilnani, Khilnani, Khilnani. So he was an author of a book called NAM 2.0. किताब आई थी एक इंडिया में 2012 की बात है, ये तब आई थी. NAM 2.0 करके किताब थी जिसका ऑथर था सुनील खिलना. उस बुक में there were certain provisions and points which were mentioned. First and foremost point was कि countries must focus on domestic growth which will propel their military growth. So first point of the NAM 2.0 document was कि let's focus on domestic growth that will generate surplus for the purpose of military growth. So countries must pursue this new path, domestic growth. Second point is associated with the first one, where it said कि when countries pursue domestic growth, this domestic growth will ensure that the countries do not focus on confronting each other militarily and promote global village culture of globalization through domestic growth. Because sir, domestic growth today is not possible without globalization. In a globally integrated world, if everybody else also promotes domestic growth and less military growth, then surplus generated out of domestic growth in a globalized world can help you better. So it will reduce conflicts. Third point mentioned in the document was to promote regional diplomacy. The world must try to create a globally peaceful world, but which is only possible not through a big United Nation type organization, but through regional diplomacy. सर ये बड़ा innovative solution है वैसे कि भाई UN as an organization has failed to bring about large scale global peace. Different areas of the world have different ways of looking at peace. So best way to look at peace is that you create a scenario where regional diplomacy is promoted. Next point that it advocated was that India must emerge as a leader of the global south. See sir, this point you can also use when you write an answer on global south. Ki the first time when it was mentioned that India must emerge as a leader of the global south is in the document NAM 2.0 Sunil Khilnani. And then today we see it in the form of India in G20, जहां पर हमने ग्लोबल साउथ और ये सब चीजों की बातें की थी. अच्छा, अब इसका अगला पॉइंट है सर दैट इंडिया मस्ट फोकस ऑन बिकमिंग अ नॉलेज इकोनॉमी. नॉलेज इकोनॉमी सर, बिकॉज इसमें ये बोला गया कि सर इंडिया एज अ नॉलेज इकोनॉमी मस्ट फोकस ऑन इंश्योरिंग कि द ग्लोबल level countries in the world get a taste of India's traditional ancient wisdom.
सर ये इंपॉर्टेंट है ना सर, अब हमारा इतना अच्छा एंशंट विजडम है, मैं वही आपको हमेशा कहता हूँ कि सर इतनी अच्छी एंशंट विजडम बेस्ड इंडिया की सोसाइटी रीले बना रही है। मतलब रीले बनानी है तो भाई साहब आप किसी अच्छे स्पिरिचुअल टेक्स्ट पे बना लो, लेकिन रीले बन रही हैं यहाँ पर नाच गाने की, जिमों में रीले बन रही हैं। तो इस चीज को समझो आप। तो ये सारे रिकमेंडेशन दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है जी। क्लियर हो गया जी ये जो अगला यूनिट है ना हमारा, ये वाला सेगमेंट 2, अगर आप देखो पेज नंबर 37 पे आप गए तो इसमें ये जो टॉपिक है ना, अगर आप ऑर्डर ऑफ द स्टडी में देखो, तो जहां तक ये सार्क वाला पॉइंट है ना, साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, यहां तक चीजें सारी फैक्चुअल हैं, दे विल नॉट टेक मच टाइम। थोड़ा सा जो कंसेप्चुअल इशू आएगा वो आपका इम्पेडिमेंट्स टू रीजनल कोऑपरेशन वाला इशू है, वहां पर आएगा थोड़ा, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी चीजें जो हैं बेसिकली वो समझने वाली है। वहां तक अदरवाइज इजी है, बट वो समझने वाला उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना अभी तक हमने समझा था। और आगे जनरली जितना इंडिया वाला पार्ट है वो रिलेटिवली इजी है। अब नेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आपका फिर आगे बढ़ेंगे जब हम, तो आएगा वो थ्योरी वाला पार्ट पूरा, जो IR थ्योरीज हैं खास करके, आइडियलिज्म, रियलिज्म, मार्क्सिज्म वगैरह, बट वो आपको अच्छे से समझा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। चलो फिर एक काम ये करते हैं जी कि आज की क्लास को अब यहीं एंड करते हैं। 9:30 बजे फिर हमारे पास अब वो है हमारी जो डाउट सेशन है, उसको आप अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है। और बाकी नेक्स्ट पॉल साइंस की क्लास जो है वो मंडे को है, 7 o'clock to 9 o'clock हम लोग ये रखेंगे PSIR फॉर नेक्स्ट 1 वीक। 15 मिनट ब्रेक देके 9:15 बजे से लेके 1:15 बजे तक रात GS करेंगे। ठीक है जी। इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे, इको इज इजियर। और इको की क्लास जब कल मिलेंगे तो मैं आपको समझा भी दूंगा उसका पैटर्न पूरा। ठीक है। तो कल नहीं, सॉरी परसों, परसों है इको की क्लास, कल तो वो लाइसेंस का पता नहीं क्या सिर खपाई होगा, तो वो करेंगे। बाकी परसों आपसे मैं दोबारा मुलाकात करूंगा शाम में। ठीक है। और कंटिन्यू करते हैं इसको आगे, तब तक थोड़ा सा कंसोलिडेट करो जितनी चीज़ें करी हैं हमने। और जैसा मैंने आपको बताया कि नवंबर में ऑप्शनल को अपन लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर अपन ये करेंगे कि दिसंबर में आप डाउट क्लासेस के थ्रू अपने जितने भी डाउट्स होंगे उनको रिजॉल्व करते रहना। तब तक आपका पेपर 1 भी ग्रेजुअली स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी साथ साथ फायदा चलेगा। फेब्रवरी एंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा कंफर्टेबली। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलो जी। ओके। मिलते हैं 9:30।